हेलो, आवाज आ रही है? तो हेलो, आवाज आ रही है? कृतिका, ये हेलो कृतिका, आवाज आ रही है? yes sir. ओके। So today we are going to discuss the rest question of the tutorial 5. Okay, so I'm just sharing you the file now that is related to the tute. I'm So just webinar sharing will you. not be conducted. Actually, webinar was going on, but in between the session, somebody else from your class, somebody beyond your class have been joined, and some interruption be created into the webinar. So that's why sir has disconnected, and after that I have joined again. So only limited students have joined. Sir, actually the thing is we are having another class from 1:45. Computer organization and architecture. We are having the tute of it. Okay. But I think I have the tute right now. This is my tute. No sir, CAO is Okay, hello, आवाज आ रही है? yes sir. If somebody from other class, so you may exit as EC71 tute is there. So this Okay. is EC71 tute. So if somebody from other class, so they may disconnect from there. Okay, now I am going to share the tutorial 5 basically. Just wait. Okay. आवाज आ रही मेरी सभी को? हेलो? Yes, sir. Okay. So how is your quiz? So you both of you have appeared on the quiz? This file? Yes, sir. Yes, sir. How was the paper? Sir, good. Okay. Now we are going to discuss the rest questions of this tutorial. I think, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So okay, so we have discussed the starting questions. If you see, I'm just showing you. So is it share properly? सभी को share हो रहा है जो share किया है? No, नहीं हो sir. रहा है. No, sir. अभी नहीं हो रहा. Okay. I'm just sharing again. Okay. So now it is shared to you all. No, Just sir. see. I have shared now. Sir, show me.
हेलो, शेयर नहीं हो रहा है? No, sir. Okay, just having some problem. Just wait, I'm trying again. Now I think it is shared. Now it is shared. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so is there somebody other than this final year in the group? No, sir. Okay, I think nobody is there. Actually, some students were confused due to the webinar that was just happening. That's why there's somebody have joined with the same ID and password, and they are just from other classes in view of webinar. Okay, so that is now over. So now we start with the tutorial 5. Clear? So we are having the questions from the intro application layer, so that we have discussed in the previous tutorial. That is, what is the concept of application layer? Clear? Then we have the question, what do you understand by the domain name system? We have discussed it. Clear? डोमेन नेम सिस्टम में हमने आपको बताया था कि कैसे हमारा एक रूट सर्वर होता है दैट इज कनेक्टेड विद द link branches. So I am just showing you again the file regarding the DNS. So we have discussed this in the previous lecture basically. Sorry, previous tutorial. Okay. Okay, so we have the diagram now. So I'm just okay. So if you see, this is the diagram for the domain name system where we have a root label. रूट लेवल को हमने सब कैटेगराइज किया हुआ है दैट इज कॉम edu org gov net au in nl us. So we are divided into two categories, generic and countries. Clear? So you can see this is the DNS system basically. Then this particular first layer is also divided into the second level further, and the second level is further divided into the third level. So this is about the partial domain name system. So we have some domain name and their descriptions is also given, like com, edu, eco, gov, mil, net, org, and int. Yeah. So these are some. Their descriptions is also given regarding the domain name. So if you see, com is used for the commercial application, edu is for educational institutions, gov is for USA governmental organization, mil is for USA military, then net is for network, org is for other organization, then int for international organization. Clear? Now, if you see, each domain name is named by the path upward from it to the root. The components are separated by dots. Whenever a new system is stored in a zone, the DNS administrator for the zone allocates name and an IP address for the new server's database. A zone is a subtree of a DNS tree, and that is administrated separately. And then when new host is to be registered, the manager interactively enters the name and the IP address and the other related information. Here. So now we are having the resource recorder. So different type of resource recorders are used in the DNS. So an IP address has a type of A and PTR, which means pointer query. And there are about 20 different types of records which are available. Some resource recorders are listed below. You can see these are some resource recorded regarding DNS. That is CNAME, HI info. Here.
Then A is exactly defined an IP address which stores a 32-bit binary value. C name is the canonical name which represents a domain name. Then H info, that is the host information, and MX, that is the mail exchange record. ETR is the pointer record. Clear? NS is the name server. ये सब आपकी क्या है? These are some records available to with the resources. Clear? Then we have DNS components, that is domain name component, like domain name, name server name, resolver name, cache, zone. Clear? Now, so this is all about the DNS basically. जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था ट्यूटोरियल में, and just again repeating. Okay, so now we have next question, that is related to the file transfer protocol. ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं? We just communicate a file, that may be your image file, message, only message signal is there, or any block signal, या image, वीडियो, ऑडियो, इस तरह के सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिट हो सकते हैं. ठीक है. कैन एनीवन एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एफटीपी? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? हाउ द सिग्नल्स आर गेटिंग एक्सचेंज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड? Is there anyone who will give me the idea about this? Akshita Shukla, are you there? Yes, sir. Akshita, would you please give me some idea about the file transfer protocol? Sir, Data communication network, how the files transfer takes place. Have you any idea? ये मैंने क्लास में sir, बताया it है. is between client and server, sir. Okay. Um, Okay. आगे. Next. How the file transfer takes place. Sir, it uses TCP protocol, or sir, see, याद नहीं आ रहा. So, there is two connections, like control connection and data connection. Okay. So for sending control information, like identification, etc. Sir, FTP make use of control connection, and Good. sir, for sending the actual file, sir, FTP uses data connection, and it is initiated from port 20 and ऐसे कुछ था. Okay. So देखिए, सबसे पहले आपने काफी सही आंसर दिया है. So we have port 20 and port 21 here. So we are having two ports, and exactly दो connection होते हैं, एक data connection, एक control connection. Clear? Control connection is exactly responsible for the connection establishment basically. Yeah. And it just wait how the request and response messages are transferred from one end to another end. Clear? So it just control over that. So control connection generally port 21 यूज करता है, और जो डेटा कनेक्शन होता है वो पोर्ट 20 यूज करता है. तो दो कनेक्शन लाइन होती है. वी हैव ए कंट्रोल कनेक्शन लाइन, डेटा कनेक्शन लाइन. क्लियर? एफटीपी के केस में. और दूसरी चीज है, पहले कंट्रोल कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, देन वी यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल, then we can communicate their data on that particular line. Clear? और Yes, sir. FT जो हमारा होता है एक reliable protocol है. This is a reliable protocol because it uses the TCP connection. Is it clear? This is the basic fundamental of this FTP. Yeah. Then the second question is, what explain HTTP to access the data on www? Can anyone give me the answer of this? How can you access the data on World Wide Web through HTTP? That is a hypertext transfer protocol. Can anyone give me the answer of this? Okay. Can you explain the HTTP protocol?
Hello, STTP protocol. Can anyone explain? I just want the answers from your side also, because these topics have been covered earlier on into the class. Sir, HTTP is Hypertext Transfer Protocol. Hello. Yes, anyone want to give answers? Hello. Okay, so STTP exactly, basic concept की बात करें, it is the hypertext transfer protocol. It just having the communication between the client and server. Clear? So it exactly uses the TCP protocol as in case of FTP also. So HTTP के केस में क्या होता है कि it can access any file through the web server basically. Yeah. So that is a www, that is the World Wide Web, and the HTTP protocol basically uses port 80 generally. Clear? Port 80 को यूज करता है फाइल एक्सेस करने के लिए, and it is used on the server and basically, and then we are having the client server relationship where the request and response messages are staged. So request में भी हमारे पास तीन तरह के request हो सकते थे, request line, header, there, then body. If you see, so I just want to show you its HTTP protocol. Okay, so I have discussed this previously. Showing you the file now. Just wait. Okay, so क्लास मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Okay, I'm just showing you the file of related to the HTTP protocol. Just wait. Okay, so this is HTTP operation. So what I have told you. So there is a client server relationship. Client send the request to the server, and server reply to the client for the particular request message. Yeah. So it exactly uses the MIME header format for the communication. Yes, MIME is what multi-purpose internet mail extension. Yes. So if you see, we are having two types of messages: request message and response message. So if you see, this is the request message formatting where it includes the request line, header and body text, जो भी मैंने आपको बताया था. Request line में हमारा फिर further divide है request type, URL and HTTP version. Clear? जब भी कभी HTTP आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा. Clear? ये भी हमने आपको दिखवाया है. इसके बाद हम बात करें रिस्पॉन्स मैसेज की, तो रिस्पॉन्स हमारा अगेन कंसिस्ट स्टेटस लाइन, हेडर लाइन, क्लाइंट बॉडी, somewhere sometime it is also uses the body. Clear? Body field also. Then we have HTTP version, status code and status field. These are what? These are the part of status line. Clear? This is all about the HTTP protocol basically. इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें हेडर फॉर्मेट भी आप लोग पढ़ सकते हैं HTTP प्रोटोकॉल का. To go through the header format, header formatting भी आप लोग पढ़ सकते हैं. Now, then we have discussed SMTP protocol. Clear? So anyone explain what is SMTP protocol?
Any one of you can explain SMTP protocol? Class, SMTP प्रोटोकॉल कोई एक्सप्लेन करेगा? Okay, so SMTP protocol is what? SMTP is the simple mail transfer protocol. This protocol is generally evolved with the transfer of electronic mail from you can say one end to another end or client to server. Yes, so exactly क्या होता है इसमें? Generally जैसे हमारे पास एक MTA server होता है, then we have a client attached with the MTA, so or we can say we are having the MTA client is attached with the MTA server, so they both can communicate to each other regarding email services. Clear? So they are evolved with the SMTP protocol. So SMTP protocol exactly evolved the communication from one side to another side. This is not a type of two-way communication. Yes. So the mails will get exchanged from the client side to the user and to the MTA client, and MTA client to the uh, MTA client to the MTA server. Clear? यही आवाज आ रही सभी को? It is Yes, also sir. a type of secured communication. क्योंकि इसमें भी हमें एक TCP connection चाहिए होगा. Clear? We just required a TCP connection. This is also a secure type communication there. Clear? Okay. Then we have a compare between HTTP and SMTP. तो comparison भी हम लोगों ने discuss किया हुआ है. So I'm just showing you the file regarding comparison. Clear? So we have also the comparison of HTTP and SMTP. Okay, so we have the comparison between SMTP and HTTP. So if you see, in case of SMTP, message transfer from client to server, HTTP में क्या होता है? मैसेज आपका टू वे कम्युनिकेशन कर सकता है, क्लाइंट टू सर्वर भी एंड सर्वर टू क्लाइंट भी. सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो एसएमटीपी आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, एचटीटीपी टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है. थर्ड पॉइंट की बात करें तो एसएमटीपी आपका पोर्ट 25 यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए, एचटीटीपी आपका पोर्ट 80 यूज करता है फॉर ट्रांसमिशन. फोर्थ पॉइंट बात करें तो एसएमटीपी मैसेजेस आर टू बी रीड बाय ह्यूमन while the HTTP messages are to be read and understood the HTTP servers and HTTP client. सर्वर और क्लाइंट होते हैं वही उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लियर? The last point is what the messages are first stored and forwarded. Clear? In case of what SMTP. SMTP मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले मैसेज को डाउनलोड करते हैं, then we can access the message. अगर हम उसको पार्शली डाउनलोड करेंगे या पूरा डाउनलोड नहीं करेंगे तो we can't access the message. Clear? So this is what that is the you can say सॉरी IMAP हम लोग क्या करते थे IMAP में यही होता था कि पहले मैसेज को हम पार्शली रीड कर सकते हैं, वी नीड नॉट टू डाउनलोड द कंप्लीट मैसेज इन केस ऑफ IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. क्लियर? HTTP इज व्हाट, HTTP में जो भी मैसेज हैं दैट इज रीड इमीडिएटली, दैट इज जैसे भी डिलीवर्ड हो रहा है यू कैन जैसे मैसेज आ रहा है मैसेज आपका तुरंत का तुरंत डिलीवर्ड हो जाता है. while in case of SMTP मैसेज पहले स्टोर होता है फिर फॉरवर्ड होता है. IMAP में क्या होता है, IMAP इज द एडवांस वर्जन ऑफ द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. उसमें क्या होता है जो भी मेल्स आती है, जैसे SMTP भी हमारा मेल्स के लिए यूज होता है, तो IMAP में हमारा जो है IMAP या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जनरली पुल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं.
वो हमारे रिसीवर साइड पे यूज होते हैं या सर्वर एंड पे यूज होते हैं, जहाँ पे मेल्स को पुल करना होता है या मैसेज को पुल करना होता है। लेकिन SMTP आपका जो होता है वो केवल पुश करने के लिए यूज करता है। तो ये एग्जैक्टली मैसेज को यूजर एंड से या MTA क्लाइंट से नीचे की तरफ जहाँ पे हमारा मेल बॉक्स होगा, जहाँ मेल स्टोर हो रही है, उसको पुश करता है मैसेज। ठीक है। This is the basic difference between SMTP and HTTP protocol. Now we come to the next question. That is okay. So now we come to the next question. That is post office protocol third. इलेक्ट्रॉनिक मेल आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का ऑपरेशन हमने आपको बताया ही था। Clear? Now we have the question number 9, that is the post office protocol third. That is the version third with suitable processing diagram. What are its mode? इसकी क्या क्या मोड है, कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। हेलो, क्लास आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना? ये क्वेश्चन हमने कराया है आपको, ठीक है, क्लास में Yes, sir. पढ़ाया है, नोट्स अपने आपको भेजे हैं, उसमें आप देख सकते हैं, इसमें गिवन है। ठीक है, इफ यू फॉलो द नोट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड टू यू ऑल, सो ये आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। Yes, then sir. we have then we have a question related to IMAP 4। IMAP 4 हमने आपको भी बताया था कि POP 3 और IMAP 4 दोनों ही हमारे एक तरह से एक प्रोटोकॉल है। इस तरह के प्रोटोकॉल हैं कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज आई एम a user want to access a mail from the mail server, suppose I am now not available right now, so the mails which will come to me, that will be stored in that particular time when I am not available to the mailboxes on the server end। clear? So जैसे ही मैं available रहूंगा, then I can access the mail from the mail server। So to access these mails, initially we need to download that particular mail from the mail server, then I can access it। ये कंडीशन है कि पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें दो मोड्स होते हैं, एक होता है डिलीट मोड, एक होता है कीप मोड। डिलीट मोड में क्या होता है कि जैसे ही मेल सर्वर से मेल आपकी एक्सेस हो गई, देन यू में डिलीट द मेल, मतलब सर्वर एंड से वो डिलीट हो जाता है वही आपका मेल। और एक होता है कीप मोड। कीप मोड में और डिलीट मोड में अंतर ये, कीप मोड में वही मेल आपकी डिलीट नहीं होगी, वो अपनी जगह पे स्टोर रहेगी जहाँ पे थी, कॉपी करने के बाद भी, एक्सेस करने के बाद। रीजन क्या होता है इसके पीछे, जो डिलीट मोड होता है वो हमारा सेम कह सकते हैं सेम सिस्टम में वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई यूजर अगर सेम सिस्टम में बैठ के वर्क कर रहा है, उसी सिस्टम में काम कर रहा है, तो द मेल विल बी डिलीटेड। अगर वो दूसरे सिस्टम में बैठ के काम कर रहा है अदर देन दैट सिस्टम या नेटवर्क, तो उसको वो चाहे तो मेल को कीप कर सकता है। ठीक है, एक्सेस करने के बाद। तो दिस इज व्हाट डिलीट एंड कीप मोड। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAP4। IMAP4 हमने बताया था इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, दैट इज द वर्जन 4। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज POP। इसमें क्या होता है, दिस इज आल्सो यूज फॉर द पुल ऑपरेशन। ये भी मेल को पुल करने के लिए होता है। बस इसमें एक यही मेन फीचर है कि ये पार्शियली, इसमें जो हेडर्स होता है, हेडर को आप चेक करके और पार्शियली मेल को एक्सेस कर सकते हैं। यस, सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। लेकिन और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता। पोस्ट ऑफिस में आपको जब तक पूरा मैसेज डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। बट IMAP में ऐसा नहीं है। IMAP में आप पार्शियली भी मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ IMAP।
हेडर की हेल्प से आप सब्जेक्ट कंटेंट पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ये सारी चीजें इसमें फैसिलिटी होती है। ठीक है, ना इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइम। माइम इज द मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो उसके बाद माइम का हेडर भी डिस्कस करना है कि हेडर कैसा होता है माइम का। ठीक है, माइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लिखने में आसानी रहेगी। जस्ट शोइंग यू द फाइल। ओके, okay, if you see now the question related to MIME. Okay, this is MIME basically. So MIME is the extension to SMTP. SMTP पे extension है ये, ठीक है। It is a multi-purpose internet mail extension. It is not a mail protocol and cannot replace SMTP. कोई मेल प्रोटोकॉल नहीं है जो SMTP को रिप्लेस कर देगा। So MIME generally allows the transmission of non-ASCII data to the ASCII data. Clear? So exactly transform करता है नॉन ASCII डेटा को ASCII डेटा में, या ये कह सकते हैं it is a type of transforming network at the sender side to send through the internet. Okay, so NVT ASCII data and delivers it to the client SMTP to be sent through the internet. So NVT is what? NVT क्या होता है? कोई बताएगा NVT का फुल फॉर्म? Class, anyone tell me about the NVT full form? NVT का फुल फॉर्म कोई बताएगा? Nobody is there. NVT is what? This is the virtual terminal. Clear? Clear? This is the virtual terminal. So NVT exactly हमारा एक तरह से कह सकते हैं एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है वर्चुअली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर और क्लाइंट एंड सर्वर। जिसमें क्या होता है कि सेंडर को क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, क्लाइंट को सेंडर को सर्वर की रिसीवर की इंफॉर्मेशन नहीं होती और रिसीवर को सेंडर की इंफॉर्मेशन नहीं होती। दिस इज द मेजर पोर्शन रिलेटेड टू द माइम, वो सारी एनवीटी। ठीक है, सो MIME messages gives the detail of email which contains the MIME version, content type, content transfer encoding, etc. So this is about the MIME, that is the multi-purpose internet mail extension. इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन डिस्कस यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीवन एक्सप्लेन यूआरएल? व्हाट इज यूआरएल? क्लास, एनीवन एक्सप्लेन यूआरएल? दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेलो, यस सर, वो एड्रेस बताता है किस चीज का? सर, किसी वेबसाइट का। ओके ओके, तो इसमें
तो इसमें जैसे एड्रेस बताता हूँ कि तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी हम पूरा एड्रेस टाइप करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ डेफिनेट कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, देखिए सो इफ यू शेयर यूआरएल में जैसे हम लोग just wait, I'm showing you the basic content related to this. Okay, so this is URL basically. Yeah. So, so the World Wide Web consists of a framework for accessing documents that are located in computers connected to the internet. These documents consist of text, graphics, and other media, and are interconnected by the links that appear within the document. So the user is accessed through a browser program that displays the documents and allows the user to access documents by checking by on checking by one of these links. So each link provided the browser with a uniform resource locator. So it specifies the name of the file that contains the requested document. तो URL में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो हमारा है, जो भी हम वेब में जो भी कोई एड्रेस टाइप करते हैं, तो तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है हमारा जो कि प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे एचटीटीपी हो गया या एफटीपी हो गया। सेकेंड जो होता है हमारा होता है नेम ऑफ द मशीन, वेयर द पेज इज लोकेटेड, ठीक है, जहाँ पे वो पेज लोकेटेड होगा या लैंड कर रहा होगा वो दैट मशीन, उसका नाम। थर्ड वन इज द नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग द पेज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, सपोज वी हैव ए यूआरएल बेसिकली that is http://www.hindu.com/opportunity.html। तो इसमें पहला वाला जो है http is the protocol name, the second part is the machine name, and the third part is the file name that containing the page. So following steps are followed by the users to access a file. First one is the browser determines the URL, then second one is the browser asks DNS, that is domain name system, for the IP address of the specified machine. Then third one is the DNS sends the IP address, say 19.24.0.93. Then we have fourth point, that is browser establishes a TCP connection to port 80 on the machine having IP addresses. Then browser then sends a command for new a file opportunity.html. Then the specified machines present the file opportunity.html. Then the TCP connection release. Okay. So the browser displays all the documents in opportunity HTML file. The browser fetches and displays all the image in the opportunity HTML file. Yeah. So this is all about the URL basically. Clear? This is all about the URL. Now, we have the question explain World Wide Web. World Wide Web. कोई बताएगा what is World Wide Web? www. Ask. हेलो, वर्ल्ड वाइड वेब कोई बताएगा? Class, can anyone give me the answer for the World Wide Web? Sir, we can see web pages through it. Okay, we can see web pages through it. Okay.
Abhishek Kumar Mishra is there. Abhishek Kumar Mishra, roll number 6. Are you there? Okay, he is not available right now. Okay, Akshita Shukla, what is World Wide Web? Sir, World Wide Web is used to tell about the web pages connected to it. Sir, mm, Okay, you can access the files from the web servers. Okay, yes, sir. okay. So this is www basically. So it is a framework for accessing linked documents from the internet. Clear? So you Yes, can sir. access the linked document from the internet. So you are just using the World Wide Web. This is the framework for that. So the web also known as www. So it consists of a worldwide connection of the document or the web pages. So each page may contains links to other page anywhere in the world. सारे आपस में connected होते हैं. Users can follow a link by clicking on it. So pages break. That is, web pages are viewed with a program called a browser. So the browser fetches the page request, interprets the text and formatting commands on it, and displays the page on the screen. So the strings of the text are linked to the other pages are called the hyperlink. Where hyperlink भी होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट या जो हमारे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं that are linked with the other pages. Yeah. Yes, So if we talk about the basic model of the World Wide Web, so it's just shown in figure. And this is the basic model of this www dot. So इसमें देख सकते हैं this is the client. We have a server. So client having a relation with the server. So through TCP connection. So server having the web server inbuilt to them, and the client is having the browser program. Then it is just the hyperlink that is communicated to here. You can see here this hyperlink that is xyz.com is linked with this, and currently pages displayed by this browser basically here on the client side. So internet के through हमारा communication हो रहा है. It is communicated through internet. So this is how the model exists with the World Wide Web. So the browser follows the hyperlink by the sending a message to abcd.com, several asking it for the pages, server asking it for the pages. So when the page arrives, it is displayed. If this page contains a hyperlink to a page on xyz.com server that is linked on the browser, then sends a request to my direct machine for the S, for the page, and so on, which goes on indefinitely. Clear? The basic model for this. तो जब भी ब्राउजर कोई चीज डिस्प्ले करता है वेब पेज पे ऑन द क्लाइंट मशीन, so it clicks on a line of the text which is linked to a page that is abcd.com server. Then the browser follow the hyperlink by the sending a message to the abcd.com and so on. Clear? So the process will be continued. So this is the model. On client side, you can see the browser determines the URL. The browser asks DNS for the IP address, and DNS replies with the IP address. So the browser makes a TCP connection to the port 80, and it then sends over a request asking for the file. Then the file on the server end, it is sent to the client end. Then the TCP connection is released.
and the browser displays all the text in the products.html. So the browser fetches and displays all image in the file. So this is on the client side, and this is all about on the server side. सर्वर पे क्या होता है कि टीसीपी कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है पहले क्लाइंट से, फिर गेट द नेम ऑफ द फाइल, जो उसने फाइल का रिक्वेस्ट किया उसका नेम देखेगा, एक्सेस करेगा, देन गेट द फाइल फ्रॉम द डिस्क जो उसके पास अवेलेबल है, डायग्राम में दिखाया था, दिस इज द डिस्क। तो ये डिस्क से फाइल को एक्सेस करेगा सर्वर, जैसे इसको अवेलेबल हो जाएगा then it will share that file. तो टीसीपी कनेक्शन उसके बाद जो हमारा है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जब ओवर हो जाएगा, क्लियर, एंड देन रिटर्न द फाइल टू द क्लाइंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट www, दिस फाइल हैज बीन शेयर, तो देखो फाइल शेयर किया हुआ है मैंने, एंड वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी। earlier we have discussed this. Cryptography basically deal with the network security, Yes. where the data from the sender to the receiver is transmitted to the secured way. इसमें क्या होता है कि सपोज एक प्लेन टेक्स्ट होता है जिसको हम ओरिजिनल मैसेज कहते हैं, उसको पहले हम सिक्योर उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं टू इनक्रिप्शन एंड द सिक्योर्ड की। उसके बाद रिसीवर एंड पे उसको हम डिक्रिप्ट करते हैं विद द सेम की, क्लियर। तो साइफर टेक्स्ट रिसीवर एंड पे प्लेन टेक्स्ट में फिर कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। इसमें हमने सिमेट्रिक की एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ा था। सिमेट्रिक की इज द सेम की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की आपका एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है। एंड वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू आईपी सिक्योरिटी। So I think, is there any problem in this tube right now? No, sir. So आप लोग कर लीजिए, according to me it is discussed, so कर लीजिए, और इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी देख लीजिए, कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है, and then submit it accordingly on time. Clear? I think you all have marked your attendance. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर थैंक यू क्लास। Thank you, sir.